Friends, good morning, all of you. Welcome. Have a nice day. Today, our objective is to start with a video where you will have the importance of investing on shares and tax planning on share. If you even earn up to rupees 50 lakhs, your tax will be zero. So before that, I like to tell you, in 2018 and comparing with 2022, the number of retail investors in India have increased manifold. Unbelievable increase in share market. Therefore, I believe that the share market tax planning is very important. So let us first offer our gratitude to the legendary investor Warren Buffett and his golden investment mantra is always important, always inspiring for any generations to come. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. That means when market is falling, there is a blood in the market. Make a go for choice of the selected good investment so that you will earn more. And when the market is rising, everybody is putting money, you think of selling your portfolio. So let us start. Our objective is tax planning, but let us start with the income from shares. The two type of incomes are coming in the share, and the income is either short-term capital gain or a long-term capital gain. Shares, short-term, long-term. If the shares are listed in recognized stock exchange like BSE, like your NSE and all other stock exchange, recognized stock exchange are there, you can have short-term or long-term capital gain. Friends, so there are two types of short-term and long-term capital gain on shares, and short-term capital gain and losses. If the shares are listed in the stock exchange, in a recognized stock exchange, are sold within 12 months of purchase, the seller may have a short-term capital gain or a short-term capital loss. Long-term capital gain more than 12 months of holding, either long-term capital gain or long-term capital loss. The long-term capital gain up to rupees 1 lakh. If the transactions are made and STT paid, that is security transaction tax is paid, then friends, 1 lakh the long-term capital gain exemption is there. That I am talking, this is a basic exemption. And if you are listed in a recognized stock exchange and your capital gain is more than 1 lakh, the balance is taxable at a flat rate of 10% and indexation benefit is not applicable. If you opt for indexation benefit, then 20% flat rate of taxation is there. I have seen in my experience, sometimes it is better not to take the indexation benefit. So let us now come to the short term and
long-term capital gain. As you know, the short-term capital gain is taxed at a 15%, irrespective of your income slab. There are, for individual, there are different income slabs are there, but short-term capital gain is taxed at a flat rate of 15%, irrespective of your tax slab. फ्रेंड्स, जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, द रेट्स व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, these are applicable if the shares are listed in the recognized stock exchange and STT is paid on the transaction. STT means security transaction tax. Friends, let us talk about the unabsorbed short term loss. अगर शॉर्ट टर्म लॉस इस ईयर में आपका एडजस्ट नहीं होता है, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 8 years. फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस can be adjusted in short-term capital gain and long-term capital gain. But long-term capital loss, as I am telling you, that can only be adjusted with long-term capital gain. So, friends, long-term capital loss adjusted against long-term capital gain is not adjusted. It can also be carried forward to the next 8 years, and it can only be adjusted against long-term capital gain. Here there is a difference. Then let us come to what exemption we can get. I have already told you, friends, 1 लाख तो आपको मिल जाएगा long-term capital gain से. Another one point is section 54F. कोई आदमी अगर एसेट सेल करके हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर जितना पैसा में सेल किए नेट कंसीडरेशन अगर फुल्ली हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए यूज करते हैं, तब आपको पूरा कैपिटल गेन का छूट मिल जाएगा. मान लीजिए कि आप कोई एसेट को, शेयर्स को आप 15 लाख रुपया में सेल किए, उससे आपका कैपिटल गेन 10 लाख, 10 लाख. बट आप 15 लाख देकर के एक मकान परचेस किए, तो ये 10 लाख कैपिटल गेन आपका छूट हो जाएगा. अगर आप पार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन होता है. मान लीजिए कि 15 लाख में आपका 10 लाख कैपिटल गेन, सो 10 लाख बाई 15 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख, तो 10 लाख बाई 15 लाख इंटू 5 लाख, दैट विल बी योर exemption. So if you invest in purchasing house, the full consideration you receive, then all the capital, long-term capital gain arising therefrom will be exempted from tax. Then comes the new property, whatever you are purchasing, either you purchase or you construct from the date of sale before 1 year or after 2 years, the new property has to be purchased or constructed. So before जो आप शेयर ट्रांसफर करते हैं उसका 1 साल आगे और 2 साल बाद, इसी टाइम में आपको हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहिए, तब आपको ये डिडक्शन मिलेगा. The another point is, suppose you cannot invest in house property under section 54F, you can put your money in capital gain account scheme. These are available in most of the
nationalized bank, SBI में ये है, you put over money there is a lock-in period of the money, you have to make a investment within 3 years. Here is a IT80 rule. The rule was you have to, for utilization, you have to take the permission of the AO. Now IT80 has ordered that permission is not necessary for utilization. Anyhow, so let us come to this capital gain. जितना सारा डिडक्शन है 80C to 80U, ये कैपिटल गेन इनकम में एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ये तो 54F का मैं बात करते हैं जहां आपको मकान परचेस करने से डिडक्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स. अनदर वन इज योर बॉन्ड 54EC. अगर आप RECL बॉन्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी of India bond, there are 2 bonds are there that are listed in the official website of the income tax department. The lists are also there. You can invest maximum up to 50 lakhs in the bonds. One is your NHAI, another one is your Rural Electrification Corporation Limited bond. So if you are investing in the bond, then you are getting full exemption, no problem. So friends, if your income you can park out in these 2 places so that you will get the complete benefit up to 50 lakhs under 54EC. Friends, that 54EC में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका सेल होने का बाद जो पैसा मिलेगा उसका 6 मंथ का अंदर ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. 6 मंथ पीरियड का अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. लेट अस कम टू वन केस स्टडी. एज आई हैव टोल्ड यू दैट कैपिटल गेन, देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर टैक्स प्लानिंग. योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन is 2,50,000. long term capital gain on sale of shares 25 lakh. cost of acquisition 10 lakh. so आप शेयर सेल करते हैं 25 लाख में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,50,000. so total comes to 17,50,000. टोटल कम्स टू 17,50,000. उसमें आपका बेसिक एग्जेम्पशन जो मैं आपको बोले थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपीज आपका एग्जेम्पशन, तो आप 1 लाख हटा दीजिए तो आपको रहेगा 16,50,000. उससे 2,50,000 ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये रहेगा. और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 14 लाख, क्योंकि 1 लाख तो एग्जेम्पशन हो गया, उसको आप 54F 54EC ये दोनों में कहाँ भी इन्वेस्ट कर दीजिए या दोनों में कर दीजिए पार्टली, यू विल गेट 14 लाख एग्जेम्पशन. 54F में अगर मकान परचेस करते हैं पूरा पैसा में, जितना सेल प्रोसीड्स उतना में करते हैं तो आपको पूरा मिल जाएगा. अगर आप मकान परचेस नहीं करते हैं तो बॉन्ड परचेस कर लीजिए, आपको पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा 50 लाख तक. अगर आप चाहते हैं कि दोनों करेंगे तो दोनों भी करने से आपको 14 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रहे 2,50,000 ये रहेगा. ये आपको पता है कि 2,50,000 तक इंडिविजुअल इनकम का कोई टैक्स नहीं लगता है. देयरफॉर फ्रेंड्स, टैक्स विल बी 0. Friends, if you make a proper tax planning, then you will get a freedom from tax. But tax planning should start not after the close of the year. That is not after 31st March. It should be started beforehand so that you will get the benefits of tax planning. Friends, for your patience, I like to extend you a big thank you. Thanks all.